Hello everyone and welcome to StudyIQ Jai Jagannath. Once again, Jai Jagannath to all of you. आज ओपीएससी रिजल्ट आसी जाइए 2023 रो जो 2022 एंड 2023 रो जो रिजल्ट आज आसी जाइए एंड शायद समस्त देखी थे एंड आई होप कि जो मनकर हेनी आई एम हैविंग कौन कह आई एम दुखित मुझे बहुत दुखित एंड आई होप कि नेक्स्ट टाइम जो मनकर इथर हेनी से मनकर ही जाऊ जिते जल्दी हम ही जाऊ दैट इज माय प्रेयर टू द लॉर्ड जगन्नाथ ऑलमाइटी आई होप they will also put their good effort next time or this time ଆଉ ଏଇଥର ହେଇଯାଉ ତମମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ବି ହେଇନି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏଥର ବହୁତ ଭଲ ହେବ ଏଫର୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହେବ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଏଫର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି नो डाउट लकी एंड ଦେଖ ଲକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୋଟେ ଥାଏ नो डाउट ଲକ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଲସୋ ଦେୟାର but log को if I keep aside the log then I have to say के keep up and move ahead, give your best. साउंड स्लो तो नहीं ठीक अच्छे साउंड राइट तेणुक जो मैंने भी मुझे कहबी तो आज सेशन को स्टार्ट करूँ आज सेशन जदि आम कह गुड इवनिंग सस्मिता सुलोगना लेलिमा शिखा लिकू सनु एवरीबॉडी इज देयर सो आज सेशन को हम स्टार्ट करवा है नहीं next time good luck to you Sulogna and let's see the start the today's sessions आज जो सेशन रही MCQ रहिबो 30 MCQ questions रहिबो and that is based on act policies and convention of the environment so me Sibasankar Hazara again with you with the environment MCQ and the first MCQ is before you चलो फिर The first one, the Environment Protection Act 1986 was enacted in response to the which of the following event is a Stockholm Conference 1972 or Bhopal gas tragedy 1984 or Chernobyl disaster 1986 that is Chernobyl disaster in Russia is a nuclear disaster that was also some of the radiation that came out from the plants and the Earth Summit 1992. देखो तो डिमोटिवेशन हबार नो डाउट के दिस इज द टाइम के ओबियसली कष्ट तो लगे हार्ट ब्रेकिंग रही एफर्ट देलापर जी न हो एंड यहाँ तो सामान मु कहि एमती बहुत पिला अच्छा से भी होनी किए दी थर इंटरव्यू देलानी किए मेन्स 3-4 थर लिखला बट किसी गोटे ही सल्यूशन आई वुड से जोटा आम हैंड रोचे ना जोटा आम हैंड ना ताकू मुझे डिस्कस करी ना जोटा आम हैंड अच्छी के यू कैन इम्प्रूव द मु कहि नॉलेज सहित प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव कर बेटर आई वुड से के प्रेजेंटेशन जो मेन्स आंसर राइटिंग प्रेजेंटेशन इम्प्रूव दैट वन दैट विल आउ जो मानकर इंटरव्यू देला पर हेनी दैट मीन से ऑलरेडी बहुत ही मेहनत करिसेंती आउ से मानेकर कांसेप्ट समाउ क्लैरिटी अछि आउ मु भाबुची कि तम मानकर हे जवा आगु को and with my best wishes and I do also pray to the almighty Lord Jagannath for your earliest success as well. Sulogna. राइट गुड इवनिंग सुनीता लिनिमा आज वेल तो जदि हम देखा तो आंसर वुड बी भोपाल गैस ट्रेजेडी जोटा मु कहबी गुड इवनिंग सुनीता बराल आज वेल तो देखो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जोटा हेतला तमरा स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस वाज द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इन द वर्ल्ड दैट टॉक अबाउट द ग्लोबल वार्मिंग एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजन दैट मींस बिकॉज़ गोटे हेतला स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस आ गोटे होची स्टॉकहोम कन्वेंशन बट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉकहोम कन्वेंशन Stockholm Convention was against the persistent of pollutant, but the Stockholm Conference that happens in the Sweden, that was the first conference that talk about the global warming, that talk about how the world will move ahead. Right. And the Bhopal gas tragedy जोटा हेतला समस्ते जानते ताकू नहीं कि आज 50 वर्ष ना के 40 वर्ष हो गलानी ताकू नहीं कि ये क्वेश्चंस मते आसी पारे चर्नोबिल जोटा मुखली न्यूक्लियर डिजास्टर हेतला रशिया रे आज समिट 1992 हेतले तो राइट आंसर इज बी तो समस्ते बी आंसर दैछ तुम वर्ल्ड ओस्ट डिजास्टर जम के वन ऑफ द ओस्ट डिजास्टर हेतला बहुत लोगों को परे परे मते जस्टिस मिलिची
तो फर्स्ट क्वेश्चन इज करेक्ट। बाकी देखो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस जोटा रही जो कन्वेंशन सेटा होची परसिस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट ऊपर थिला तो एटा तमे मन रखिबो। नाउ नेक्स्ट कम्स टू द सेकंड क्वेश्चंस। Which of the following pairs is correctly matched? Montreal protocols for the ozone depleting substance, Kyoto protocol for the greenhouse gases emission, Paris agreement legally binding emission cut for the all nation. चलो फिर देखिए आंसर देव। बाकी मु कहि दे वंस अगेन आई विल रिपीट ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल रही जो मु तुम मन को शेयर कर दिए अपार्ट फ्रॉम दैट वैल्यू एडिशन मध्ये दिए पर्सनल मोर चैनल यू कैन जॉइन आल्सो स्टडी आईक्यू दीटा अच्छी स्टडी आईक्यू टेलीग्राम जॉइन चैनल कर परिबो और यू कैन जॉइन माय पर्सनल टेलीग्राम चैनल दैट इज ओएस मेंटर राइट कौन रही ओएस मेंटर तो दीटा आपण माने जॉइन करंतु एंड गेट द मटेरियल्स देयर सेठी आपण मन को ये सब मिल जिवो कोन ओएस मेंटर तो ये आपण मन को मिल जिवो राइट सो दैट विल बी देयर एठी आपण को पीडीएफ्स वगैरह मिल जो जॉइन कर दबो। बाकी तमरो जते फ्रेंड्स वगैरह अछंती जो ने सिविल सर्विस में प्रिपेयर होछंती चाहे यूपीएससी हो ओपीएससी हो जॉइन कर दिबे वेस मेंटर। थैंक यू एवरीवन। चलो फिर सो नाउ एठी जदी हम देखबा आंसर कोन आसु देखबा आंसर जदी कहबो मैक्सिमम आसु ए एंड द सस्मिता लिक्विज देयर शत्रु सुजाता शिखा सुनीता सुलोगना शुभकांत सोनू प्रसाद everybody is going for A पे जाऊँगी ना Paris agreement it was not legally binding this was NDC national determined contribution and according to the national determined contribution आम जो पंचामृत थिला 500 gigawatt 50% of non renewables that is renewable source रो आसीबो एनर्जी 2070 जो टारगेट आम रखी कि नेट जीरो कथा 45% ऑफ जीएजी एमएससी जो एमिशन को रिड्यूस करवा ये जो सब पांचटा थिला ना ये पेरिस एग्रीमेंट जो एनडीसी थिला से एनडीसी रे आम प्रपोज करथिले राइट। लोपामुद्रा आल्सो जॉइनिंग मी एंड दैट इज व्हाई जो नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन एंड एथरे कौन थिला सबु देश कंट्रीब्यूट करिवे बट दैट वुड बी विथ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट विथ एवरी नेशन विल हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी बट विथ डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। चलो एनडीसी समस्त बुझी पारियो पंचामृत मु आउथ रिपीट करते पंचामृत रे टारगेट कौन थिला एक थिला 2070 टारगेट नेट जीरो सेकंड होची कि 500 गीगावाट ऑफ एनर्जी विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिन्यूएबल सोर्सेस एंड 50% of energy will comes from the non-fossil fuels and 45% of carbon emission will be reduced. Then आथला 100 what that is the 100 ton है ना 100 tons जोटा की थिला of reduction of carbon dioxide एटे थिला ना 100 tons बस ये थिला तमे एनडीसी फटाफट आसी जो नेक्स्ट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल 2010 रे आस्थिला कोन पय एटा तो 1 टन नथिला 100 टन कार्बन डाइऑक्साइड जोटा की एमिशन को रिडक्शन करबा है ना ठीक अछि। गुड इवनिंग लोपामुद्रा। चलो फिर नेक्स्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 एनजीटी जोटा मु तुमको कहतली कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल वाज एस्टैब्लिश अंडर कहा अंडर है बहुत इजी क्वेश्चन अछि करि परियो समझते बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2010 जोटा कि बायोडाइवर्सिटी को आमे कहबा कंजर्व करबा एंड जहाँ बेनिफिट्स आसबो ताकू आमे केमती लेगाली आमे कहबा यूज करि परिबा एंड इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हे परिबो। एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल एक्ट 1981 अनुसार हमर जेते एयर प्रिवेंशन को करूची एनजीटी 2010 ऑलरेडी देयर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 आल्सो देयर बहुत इजी क्वेश्चंस एंड बी इज द कॉमन and easy to all right the common and easy to all hope that this would not be a difficult one to all। चले अच्छा मते को एनजीटी जो हैला तमरा एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स एक्ट जोटा सला ये इंस्पायर्ड बाय व्हाट मु जदी कहबी द एनजीटी इज इंस्पायर्ड बाय व्हाट को एक्ट द्वारा इंस्पायर्ड है ए सेम ऑप्शन रुको मते सेम ऑप्शन
बहुत बढ़िया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, करेक्ट आंसर. Now next, match the following environmental conventions with their subject matter. Ramsar Convention, Endangered Species Sites, Wetland International Conventions importance, Basel Convention for the transboundary movement of the hazardous waste, Stockholm Convention for the persistent organic pollutant. You have to match it. बहुत बढ़िया आंसर दे चलो पमुद्रा, सुस्मिता, समीर, माई लाइफ स्टाइल एज वेल. चलो फिर नेक्स्ट वन आराम से ही परिबो. देखिए मैच करवा. आंसर जब देखिए तुम मन को आसूची 4 आसूची सस्मिता, लोपामुद्रा, सुलग्ना, सुलग्ना, तनु प्रसाद, लकी, लिकू, सुभस्मिता, सुजाता, माई लाइफस्टाइल, प्रकाश, लिलिमा. Everybody is going for A and A is the correct answer. Yes, this is the correct answer. A is correct answer. एथरो 100% तुमको मेंस रे मध्ये अपॉर्चुनिटी मिलिबो. You will have also आकु जति मन रखुछ मेंस रे मध्ये तुम लिखि परिबो, राइट, सेथरे मध्ये तुम लिखि परिबो. So that is why these are importance, right? बहुत बढ़िया समझते देছো लोपामुद्रा, प्रकाश, माई लाइफस्टाइल, एवरीबॉडी बहुत बढ़िया, ग्रेट आंसर. चलो फिर नेक्स्ट, ये तो समझते भाष देखो. आज मोर टार्गेट थिला कि एक्ट कन्वेंशन ये सब पार्ट रु करदेबा, देन तापर हम करंट अफेयर बेस रु नेक्स्ट क्लास रे हम करंट अफेयर बेस रु करबा. चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पॉलिसी एक्सप्लिसिटली इंट्रोड्यूस टू दैट इज टू कांसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. अच्छा एइथरे तुम माने जानचो कि एइथरे जो मॉन्ट्रेक्स रहिछि तमर कोथरे, मॉन्ट्रेक्स कोथरे रहइबो हमर रामसर कन्वेंशन रे मॉन्ट्रेक्स रहइबो, ई तो सब जानचो तुम माने. ओके, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ. एक मिनट कमेंट कटिगला मु टिके कमेंट देखुछि. 5 नंबर बी बी चलछि ट्रेंडिंग रे. जदि मु देखिबी सुजाता, लोपामुद्रा, लकी, सस्मिता, समीर, लोपामुद्रा, शिखा, लिलिमा, सस्मिता, शुभकांत, शत्रुजित, एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर द बी. द बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, बी इज द करेक्ट आंसर. तो जदि हम देखबा नेशनल, हां बी इज द करेक्ट आंसर. कोडा केते नंबर 5 नंबर बी केमती हो, नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटजी. बी, बी इज करेक्ट. बी आंसर कोन हबो? 5 नंबर बी कौन कहीदेल समस्ते? बी तो हेनी, सी हम ना, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2006, नेशनल एनवायरमेंटल पॉलिसी 2006 रे आसीबो ना. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी एक्सप्लिट, हैं इट वुड बी सी हबो आंसर ना. कोन एटा चेक कर दबो, टिके चेक करबा. आंसर विल बी सी. हां, आंसर विल बी सी. ये करेक्ट कर दे, आंसर सी रहइबा. सी विल बी आंसर. मुगले समस्ते बी दे इधर को. नेक्स्ट आसो.
Consider the following statement regarding Biodiversity Act 2002. It provides for the creation of the National Biodiversity Authority (NBA). Local bodies can establish biodiversity management committee. Only Indian citizen can access the biological resource for the commercial use only. 6th number. MS Chaudhary Prayagraj is saying कि sir it would be 1992 also. 6th number. Come to the 6th one. Consider the following statement regarding the Biodiversity Act of India. It provides the creation of the National Biodiversity Authority, that is NBA. The local bodies can establish the Biodiversity Management Authority, and the only Indian can have the accessibility for the biological resource of the commercial use or for the commercial use. चलो फिर next one. चलो चलो आंसर दे आंसर. Come on. कहीं क्यों बनी? देखो, Biodiversity Act 2002 when it came, that means see the foreigners would not be allowed. Let's say when it comes to biological resource means what? Let's say any kind of flora and fauna. Why we will give the accessibility to the foreigners to use that? This is the what resource of India, and it must be used by the Indians. Why should we give to the other nation, right? So that is why only Indian citizens will have rights over the biodiversity, over the biological resource of India for the commercial use. Other nation, if we will give the accessibility to the other nation for the commercial use, then they will exploit it. Right. For the medical research, the other nation peoples, let's say somebody is out of, I would say not citizen of India, the foreigners will have opportunity to have the scientific research, but the commercial use only that would be by the Indian citizen. Now next we will comes to the Rio Summit. 1992 led to the adoption of what? Rio Summit. Biodiversity Management Committee also. As Prayagraj is saying, this is NBA, National Biodiversity Authority, and that is the Biodiversity Management Committee as well, both. Okay. Now comes to the question number 7. The Rio Summits, that is also called as the Earth Summit, that happens in Brazil after the 20 years of Stockholm Conference. Question number 7. Come on. That is Kyoto Protocols, that was Agenda 21 is there, UNFCCC is there, CBD also there, Convention on the Biological Diversity. Led to the adoption of what? Led to the adoption of what? UNFCCC also sometimes they releases the report like AR6, AR7 reports also there. Agenda 21 for the what? Greenhouse gases. Kyoto Protocols also for the greenhouse gases, and Agenda 21 also to restrict the what? This is for the global warming and greenhouse gases, these two. Convention of the that is on the biological diversity, that is CBD also there. So these are important. Other things that was there, that is what? De-desertification was also there. COP3 Kyoto Protocols. Kyoto Protocols came in which year? Anyone? 1995 or 1997? In which year? Anyone? So answer would be A. The right answer is given by Lopamudra. Then Prayagraj, that means Mr. Chaudhary of UP, that is Prayagraj Chaudhary as well.
and many of you like Liku, Samir, Shikha, Sonu, Sibasmita, Rasmi, Shunita, everybody has given good answer. That is the 7. Sujata, Satru, and answer will be A. The answer is A. It's a 1997. Correct answer is 1997. Both body has what? Satrujit. Rasmi also, both body. Kyoto protocols, and that Kyoto protocols also what? For the greenhouse gases, for the greenhouse gases. Now, the Air Prevention and the Controls of the Pollution Act 1981 was enacted primarily to implement which following commitment? Which following commitment? Question number 8. Liku is going for A. Subhakant is going for A. Little, Sonu, Shikha, Sasmita, Samir, Everybody is going for A. देख को देखले जाना पड़े कि 1981 रे जदि आसी जे हाउ दिस वुड बी पॉसिबल, हाउ दिस वुड बी पॉसिबल, हाउ दिस वुड बी पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल, तो ये ऑटोमेटिकली तो कैंसिल हो, दिस वुड बी द राइट आंसर because it came in 1981 and these things happens 92, 97, 2015, so that there is no relation with this. ऐसा नहीं कि हम पीछे जाके फिर करें. right? Priyadarshini also there, and that is why the by default it would be what? 8 is A. So 8 will be A answer, as this is simple to eliminate these things are because these are the after happens हो, मतलब बाद में ही हुआ है, right? And this thing I said, this is the watershed movement in the when it comes to the environmental movements in the world context, and that is the Stockholm conference, and that Stockholm conference and the what that is Club of Rome, that Club of Rome, that is very important, the Club of Rome that gave the fast report in 1970s, that is limits to growth, and in 1992 limits beyond the limits to growth. So there are two reports, that Stockholm conference and the Club of Rome. You have to remember that. Now comes to 9 number question. In the Wildlife Protection Act 1972, which of the following schedules provides absolute protection or the highest protections offenses can be compounded? Bilingual means what? You are looking for Hindi, English, or Odia? Chaudhary, what you are looking for? हिंदी चाहिए किसी को? हाँ, हिंदी इंग्लिश चाहिए, दोनों पे हो जाएगा. देखो उड़िया पे भी बहुत सारे लोग हैं इधर. राइट. चल देखो इस आंसर को देख लो कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट दैट 1972, दैट ऑब्वियसली इट वुड बी schedule 1 and the part 2 schedule 2 that will have the answer 1. समझ में तो आ ही होगा, मतलब आ रहा ही होगा सबको, राइट? बाइलिंगुअल पे ही जा रहा हूँ मैं, है ना? तो आपको यदि हम देखिए दैट इज व्हाट द हाईएस्ट प्रोटेक्शन इज ऑलवेज गिवन टू द schedule 1 and the part 2 of the schedule 2 as well. So that is why the answer will be the okay. Now if I say gangetic dolphin, gangetic dolphin is added into which schedule, whether it's 1, 2, 3, 4, where? Gangetic dolphin, the national aquatic animal, last class I discussed this one. UPSC asked twice. Bikramsila Sanctuary, Darbhanga districts, Kode, Bihar, Ganga River, Sisu, endangered, all these things that happens, discuss उसको हमने पिछले क्लास पे किया था. Now answer is coming all the way from 9A. तो यदि हमें 9 रो यदि ऑप्शन देखिबा लिटिल को 9C, C would not be answer, A will be the answer, right? A will be the answer. How could it be? बहुत बढ़िया. Lucky is going for A. Yes, the right answer is the A. So this is the right answer. हाँ, blind, it's a blind one.
Then the Indian National Action Plans for the Climate Change NAPCC consist of how many national mission? This is very important. This kind of actual questions OPSC do ask. मतलब ये डेट क्या हो गया, क्या क्या था, वो हो गया, सारे ऐसे जो फैक्चुअल क्वेश्चन है ये भी आ जाता है, राइट? जय जगन्नाथ दास लकी। बाकी मैंने आंसर दियो। तो नेशनल एक्शन प्लान क्लाइमेट चेंज जोटा रही तुमर इट्स हैविंग 8 नेशनल मिशन। 8 national mission. How many? Yes, बहुत बढ़िया आंसर दो तुमने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन तमने देखो द कंपेंसेशन द कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड कांपा जो हितला कौन पे देखो लोपामुद्रा को सर 6 and 8 with their confusion. जो तुम 8 मिशन रही ये जो 8टा मिशन रही से नेशनल सोलार मिशन, नेशनल मिशन फॉर द एनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी, मिशन फॉर द सस्टेनेबल हैबिटेट, नेशनल वाटर मिशन, नेशनल सस्टेनेबल हिमालयन मिशन, नेशनल मिशन फॉर द ग्रीन इंडिया, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड द नेशनल मिशन ऑफ नॉलेज एंड क्लाइमेट चेंज मु शेयर कर दूची टेलीग्राम चैनल रे। नोट कर देलो ना, सेटे नोट कर देलो। ओके, देन कंपेंसेटर एफॉरेस्टेशन फंड जोटा कांपा आसला 2016 रे सुप्रीम कोर्ट जानचो बार बार कहिबारु दैट मीन्स हम के सुप्रीम कोर्ट बैक टू बैक सेतल कहले कि देखो व्हाट वी हैव टू डू इज दैट कि हमर जो कांपा जो अछि तमरो कांपा को मतलब वी नीड टू प्रमोट द कांपा को हमको प्रमोट करिबार अछि काना तो या को ने कि बहुत सारा क्वेश्चंस मते आसे देखो तब माने समस्त जानचो को ने कि बहुत सारा क्वेश्चन आसी थाए मु टेलीग्राम से शेयर कर देछि त माने टिके देखि दबो हैला। ओके, सो दैट मीन्स 11 इज ए। तो 11 आंसर कौन देछि देखिबा तम माने करो मु शेयर कर देछि 11 डी 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 कौन ए देछो ना मैक्सिमम ए सुनीता बराल कोची ए तो डी मैक्सिमम आसी छि 11 कौन हैला कंफ्यूजन कौन पे एस्टैब्लिशमेंट परमानेंट कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड हाँ सेटा तो हो मैनेजमेंट बा एडहॉक रहिबो तुमरो एडहॉक रहिछि एडहॉक तो हबनी यूटिलाइजेशन ऑफ फंड फॉर द एटा तो ठीक अछि एटा तो 3 तो ठीक अछि एतिक तो बुझि परतो 3 तो ठीक अछि इफ 3 इज करेक्ट दैट मींस ये तो हबनी इधर आमे देखिबा अच्छा ये तो एस्टैब्लिश एटा परमानेंट रहइबो ना एटा परमानेंट रहइबो परमानेंट एडहॉक हबनी परमानेंट रहइबो बाकी सेथि पई तो देखो कोनोसी कंपनी होची त माने तो जानिछो कोनोसी भी कंपनी होची
देन कंपनी जेते कौन से गोटे कंपनी आसुची जेतिकी से डिफरेस्टेशन करबो तार वैल्यू बाहर कराबो तार वैल्यू बाहर कले जेतिकी पैसा हो से गवर्नमेंट को दबो आउ कांपा अंडर रे जहां भी पैसा कलेक्शन हो से देबो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को एंड देयर इज टू टाइप्स ऑफ फंड अंडर द कांपा गोटे रो स्टेट कांपा फंड गोटे रो नेशनल कांपा फंड तो स्टेट को जीवो एंड सेंटर को मध्य जीवो सेंटर को कम जाए स्टेट को अधिक जाए बिकॉज फॉरेस्ट इज अबाउट सब्जेक्ट टू द स्टेट आम कहबा लैंड ये सब राइट चलो फिर एंड ओडिशा हूँ ध्यान से मन रखो ओडिशा इज द हाईएस्ट रिसिपेंट ऑफ द कांपा फंड रु सबुठु अधिक पैसा किए पाए ओडिशा दैट इज आल्सो इंपोर्टेंट थिंग्स द polluter pays principles and the precautionary principles were explicitly incorporated in the India's laws. Question number 12. से कहूँ द पॉल्यूटर पेज मतलब जो मैंने पॉल्यूशन करबे से पेमेंट भी करेंगे प्रिंसिपल एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स वेयर एक्सप्लिसिटली मतलब जोड़ा विस्तार विषय रे कहा जाई छी जोड़ा कि एलाबोरेट कहा जाई कंप्लीटली इट इज एलाबोरेटेड दिस इज नॉट लाइक दैट inexplicit like the syllabus of UPSC and the OPSC this is explicitly incorporated in the Indian's laws through the what 23 and that is answer would be so what 12 answer would be National Green Tribunal Act 2010 what जो थे जमती तुम मैंने जानछो कि जो यमुना बैंक रे जेतरे तुमरो आमे कहबा जेतरे श्री श्री रविशंकर जेतरा आर्ट ऑफ लिविंग जेतरे से करथिले तापे मध्ये से मध्ये फाइन right so the Cartagena protocols and Nagoya protocols are related to what बहुत बढ़िया आंसर जदि हम देखिबा answer would be convention on the biological diversity CBD बहुत बढ़िया CBD that is convention on biological diversity CBD बहुत बढ़िया Thank you everyone for the patience and cooperation. CBD so answer would be CBD now 14 number question the Indian forest policy 1988 had which of the unique features कौन
कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत बढ़िया. Yes, great answer. तो आंसर जब देखा येस दैट वुड बी इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी पीपल्स पार्टिसिपेशन जब आम देखा बहुत बढ़िया राइट 14B बहुत बढ़िया आंसर. देखे एथरे तुमको मु कहिछि सबले सेंटेंसटा बहुत लंबा होता पॉजिटिव टोन थी स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑलरेडी मु कही काली मध्य डिस्कस करथली आज आउ थे आसी देख आठ इजी क्वेश्चंस आउ कोन हे पारे बहुत इजी वन स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस 2001 डील्स विथ व्हाट भूल करिवो नहीं बिल्कुल भी बहुत इजी क्वेश्चंस ऑलरेडी तुमने डिस्कस करिछ आकु whether this is climate change and mitigation, transboundary movement of the hazardous waste, persistent organic pollutants, and the conservation of wetland. POPs बहुत बढ़िया. Obviously, persistent pollutant DDT काली तुम डिस्कस करथले DDT काली डिस्कस कर नथले कि हमें we were discussing DDT Yesterday also. yes that Would be C is the correct answer. POPs is the correct answer. Everybody is given C C C. 15 नंबर बी भूल रे भी किए कहि ट्रांसबाउंडर के गोटे कहिसंती शत्रु कहिछि काहेकि लकी इज 15 लकी समीर शिखा सस्मिता लोपमंत्र लिलिमा सुजाता सुनीता शकुंतला प्रकाश शुभकांत सनु ग्रेस and everybody is going for correct. next 16 number question number 16 which of the following pairs is not correctly matched Thabira Mahakur is again coming DDT, PCBS and dioxins. बहुत बढ़िया चलो फिर नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन which of the following pair is not correctly matched Kyoto protocols clean development mechanism that is what CDM Paris agreements legally binding emission reduction Nagoya protocols assess to the benefits of the sharing genetical resources Ramsar convention for the migratory species conservation Supriya, most welcome Supriya and congratulations from my sides. I hope के rest of the service रे तमे जाइकी you have to give the best service to the peoples and mark my word कि you have to give the best justice and the service to the peoples and thank you for your तमने कहलो and के thank you so much से लिखिछि कि सर मु आज OCS final selection हे गला thank you so much for your guidance thank you Supriya and congratulations again from our team and from the family of StudyIQ. Most welcome मते देखा करे पिन चाहूच most welcome okay my number अछि ना समस्त पाखरे 7008706452 my number is what once again I repeat 7008706452 once again congratulations most welcomes as you can meet me right जदि भुवनेश्वर रे अछो ओके व्हाट्सएप कर दो मते हैला
मोर हूँ 7008706452। चलो थैंक यू एवरीवन। तो फास्ट आम देखा यहाँ तो जदि आम देखा दैट मीन्स द पेरिस लेगाली बाइंडिंग तो नाला। देख प्रथम कथा हूँ से कही ऑप्शन ओनली 1 ओनली 2 ओनली 3 ओनली 4 ये तो रही केतेटा दैट इज फॉलोइंग इज नॉट मैच केतेटा मैच नुह कौन दीटा ये तो देख लेगाली बाइंडिंग नुह से कही नॉट करेक्टली मैच ये लेगाली बाइंडिंग नाला। दिस वन इज व्हाट रामसर कन्वेंशन ये भी लेगाली ये नॉट करेक्ट। हाँ क्योटो प्रोटोकॉल्स ताले आंसर कौन है देखो पेरिस। हाँ ट्राई करो। 2 ओनली तो आंसर कौन मिलला 2 ओनली। 2 ओनली है ना यहाँ तुमको कहली यहाँ नुह दीटा नुह 2 and 4 बोथ आर रॉन्ग। এটা বা ডিসকাস কলি এটা মানে ভাবনি कि खाली এটা से ओनली ऑप्शन 2 ओनली राइट सो दैट वुड बी देयर। नेक्स्ट द नेशनल एक्शन प्लान्स ऑन द क्लाइमेट चेंज NAPCC includes which of the following। ମୁଁ ଅଲରେଡି ତମମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଆଉ ଥରେ ରିପିଟ୍ କରିବି ଏଇଟା ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ଏଇଟା ରିପିଟ୍ କରିବି ଆର आंसरଟା ଆମର जो ନ୍ୟାସନାଲ जो क्लाइमेट एक्शन प्लान एथरे 8टा अछि हम डिस्कस करथले से 8टारू रही न्यासनाल मिशन फॉर द आम कहवा न्यासनाल सोलार मिशन रही देन तुमर न्यासनाल मिशन टू एनहांस द एनर्जी एफिशिएंसी रही देन न्यासनाल मिशन ऑफ सस्टेनेबल हैबिटेट रही न्यासनाल मिशन वाटर रही न्यासनाल मिशन फॉर द सस्टेनेबल हिमालयन रीजन रही देन न्यासनाल मिशन फॉर द ग्रीन इंडिया रही देन आम कह न्यासनाल मिशन फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चर रही न्यासनाल मिशन फॉर द स्ट्रेटेजिक नॉलेज एंड क्लाइमेट चेंज रही राइट। एटा आउ थरे मु रिपीट कर देली 17 वाला क्वेश्चन 1 3 and 4। सो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी नहीं इलेक्ट्रिक मोबिलिटी तो परे आसिला दैट वाज नॉट दिस इज नॉट सो दैट इज बाय 1 3 and 4 इज द करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। तो ए जदि मु देखिबी ये तमन को भीतर किए के दोचे डी नुह डी इज नॉट करेक्ट ऑल नुह इलेक्ट्रिक टा कटि जबो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी कटि जबो राइट। हाँ बाय एनर्जी हे परबो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन the ozone depleting substance regulation and the control rules 2000 were notified under what were notified under what। जो मानकर हेनी मु तो कहबी कि देख जमती कि तुम जो सुप्रिया कहूँ कि थैंक यू सो मच 213 रैंक। हाँ सुप्रिया बहुत बढ़िया मते व्हाट्सएप कर दियो है यू कैन से हाई मी व्हाट्सएप मते व्हाट्सएप कर दियो देन आई विल रीच बैक टू यू यू कैन आल्सो कॉल मी तो मते कॉल कर परिबो टू मीट मी राइट। चलो फिर the ozone depleting substance regulation and the control rules 2000s were notified under which act। 18 नंबर जदि मु देखिबे 18 कहूँ बी कहूँ रश्मि इज गोइंग फॉर बी लोपामुद्रा इज गोइंग फॉर 1 एंड सस्मिता इज गोइंग फॉर बी 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 ए मध्य कहूँ लोपामुद्रा इज गोइंग फॉर ए समीर इज गोइंग फॉर ए एंड देखियो ताले कोन होइचे एटा कहूची कोन ओजोन अच्छा बहुत बढ़िया देखिबा ताले आंसर बहुत बढ़िया आंसर देइछो। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट दैट मींस कोथरे एटा एयर पोल्यूशन कहीं एनवायरमेंट अंडर आसबो ना एटा होलिस्टिक अम्ब्रेला दैट इज व्हाट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखो जहाँ तमरो जोटा नाही ना सब एरिया अंडर आसबो एटा तो एयर पोल्यूशन प्रिवेंशन आ भीतर ओजोन कहीं आसबो एटा एनवायरमेंट रो पार्ट ना दिस इज पार्ट ऑफ एनवायरमेंट बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी कहूँ कि थवीरा महाकुंठ शुभकांत शत्रु सुजाता दे आर गोइंग फॉर लिकू नहीं एयर सेटा प्रिवेंशन पोल्यूशन हबन। द 19 the India's national environment policy 2006 draws the inspiration primarily from what national environmental policy।
बहुत इंपोर्टेंट आराम से हो 19 number question number 19 question number 19 क्वेश्चन नंबर 19 जदि देखबा तो आंसर देखो 19 रस लेलिमा कोचिसी लोपामुद्रा सी Sunita is going for Baral is going for B. Subhakant is going for B. Sanu Prasad is C. Yes, the right answer would be what? B, Agenda 21 of Rio Summit. B is the correct answer. That is what Thavira is. Thavira बहुत बढ़िया आंसर दउची से डिफिकल्ट क्वेश्चन को बहुत बढ़िया आंसर दउची मु देखुची बट आई बहुत बढ़िया थैंक यू कैरी ऑन ब्रो राइट चलो फिर what happens? That is the national environmental policy inspired by what? Agenda 21 of Rio Summit. National Biodiversity Acts for the Wildlife এটা তো আমি বায়োডাইভার্সিটি পাই রহিছি এটা রহিছি ফরেস্ট উপরে ফরেস্ট পলিসি অনুসারে গোটে হচ্ছে ফরেস্ট পলিসি আর গোটে হচ্ছে ফরেস্ট কনজরভেশন দুইটা কনজরভেশনটা 82 রে আসবে ফরেস্ট পলিসি হলা 88 কিয়োটো প্রোটোকল 1997 ফর द ग्रीन हाउस गैसेस चलो फिर 21 Consider the following statements regarding the CITES, the Convention of the International Trades on the Endangered Species. It has 3 appendices that provides different level of protection. It is legally binding but does not replace national law. India is a signatory to CITES. बहुत बढ़िया चलो फिर फटाफट देखो चलो 20 बहुत बढ़िया सो 20 जदि देखबा यस इंडिया आल्सो सिग्नेटरी आरो त हमें अपेंडिक्स 1 2 एमते जानते अछि so this is what right answer yes this is what right and the all is the correct answer next the forest right act 2006 तमे जानि छो शेड्यूल ट्राइब्स ए मन को दिया जाए that is correct समस्त बहुत बढ़िया आंसर दै छै 2021 community gets such as the gazing and fishing rights से मन को मिली थाए right to protect and generates the conservation of the forest as थाए conversion of the forest village into the revenue village 21 चलो 21 ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन अच्छी हाँ इंडिया साइट्स मेंबर इंडिया इज ए मेंबर ऑफ साइट्स राइट D coach is Samir is going for D and Lopamudra 1 and 2 Lilima Mahakul is going for D. Sunita is going for A. Lopamudra Subhakant is A. Sasmita Samir. Okay. तो जदि हम देखिबा that means the D is the correct answer. D के देइछ देखो. D is the correct answer. D हबो ना. It will be D. D के देइछ काई D त केई दो ना. काहे कि 1 and 2 काहे कि why not the conversion of the what forest village to the revenue village कारण एथरे को है forest right act कोन जो तमरो जो माने forest dweller जो माने आमे जाको कोचे PVTGs the PVTGs will be given the right of forest right और जेतरा तमे काको गोटे forest right दउचो that means the conversion of the forest village मु forest को कहिनी मु कहिची forest village will be converted into forest revenue village not के forest को नहीं Lelima Mahakundi, yes, right answer.
कन्वर्ट हेनी से कहनी कि एठी देख एठी कहुई कि फॉरेस्ट लैंड विल बी कन्वर्टेड ना फॉरेस्ट विलेज विल बी कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू विलेज फॉरेस्ट विलेज कथा कहुई इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट फॉरेस्ट कथा कहनी जो मैंने फॉरेस्ट रोची जदि तांको लैंड राइट हमें न दबा हिस्टोरिकल इनजस्टिस हेनी कि दैट इज व्हाई ओडिशा गवर्नमेंट इज गिविंग लैंड राइट टू द फॉरेस्ट तो लैंड राइट जिते पाउछ रेवेन्यू विलेज हो ना ना कम्स टू द 22 next the UN convention to combat the desertification UNCCD is the only legally binding international agreement linking to what बहुत easy questions 8 easy question आउ कोन हे पारे को easy one सस्मिता कोच टिके कंफ्यूजन हे जाइथिली बहुत बढ़िया हेजिबो जिबा ताले एटे समस्त समान आंसर तो आसीबो कोन आसीबो अडप्ट अर्थ समिट रे आस्तला तो एटा अर्थ समिट 1992 रे हितला डेजर्टिफिकेशन एंड डिग्रेडेशन ऑफ द लैंड तो बहुत चलो इंडिया बिकम ए सिग्नेटरी ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स इन व्हेन (23) easy question easy one देखो जो मानको पीडीएफ दरकार ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिवो मु अगेन रिपीट करूची यू हैव टू ज्वाइन व्हाट ओएस मेंटर टेलीग्राम चैनल join it so it is 87 b is the correct answer b is the correct answer b जदि हम देखबा b के देछि देखबा 23 रो जदि b देखबा b is coming from the Sujata Pradhan b is the correct answer it's a factual b Montreal protocols तमर 1995 रे आसिला से एंड 1985 सॉरी 1985 रे आसिला एंड इंडिया 87 रे साइन कला बुझ बत देखो 85 रे आसिला जोटा रही तुम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स आसला 85 रे एंड 85 86 सही टाइम रे आसीबो एंड इंडिया 87 रे साइन कर देला लास्ट 6 क्वेश्चन लास्ट 6 क्वेश्चंस The Air Prevention and the Controls of Pollution Act 1981 originally empowers the Central Pollution Control Boards CP, CB and the state boards to what?
चलो 24. Okay, next 25. A. 25. Next questions. The Paris Agreement 2015 differ from Kyoto Protocols को basis रे. Paris Agreement in 2015 differs from Kyoto Protocols on what basis? This one A. ये पनिशमेंट ये कहीं दब यार पनिशमेंट दबार कैपेबिलिटीज अच्छे कि पनिशमेंट तो वायलेसन है तुम ट्राइब्यूनल को जीव कोर्ट को जीव तो यांकर कहीं यार एबिलिटी ना ये एनफोर्स कर हाँ ये कौन करेंगे एनफोर्समेंट साधारणतः एनफोर्समेंट स्टेट गवर्नमेंट करती ये एनफोर्समेंट भी करती ना ये स्टेट गवर्नमेंट एनफोर्समेंट कर ये सेट एयर एम्बिएंट क्वालिटी स्टैंडर्ड को सेट करती. नाउ 25 वाला क्वेश्चंस देखो. 25 A is coming from Sasmita, D is coming from Lilima Prakash, A Ushika, Sasmita, Rasmi. A. The Paris climate change जोटा differ from Kyoto covers all the countries not just developed one. हाँ এটা करेक्ट है. It use principles जोटा कि national determined contributions এটা हमें जानी चाहिए. It has legally binding so the global emission ना এটা तो globally तो ये binding नो सेट तो हमें जानी चाहिए कौन. तो ये is the correct answer. That means A is the correct answer. And 26 हे परिबो ये भी इजी अछि. मैथ्स तो आराम से कर परिबो आराम से मैथ्स कर परिबो. देखो आराम से मैच ही परिबो. बोन कन्वेंशन माइग्रेटरी स्पीसीज है जो वियना कन्वेंशन समस्त जान ओजोन पे रही कार्टाजेनिया बायोडाइवर्सिटी तुम रही राइट बायोडाइवर्सिटी आ रही रोटेराडम तो रही तुम बट जोटा हाजार्डस केमिकल्स पे रही. अच्छा देखो मैच कर तुमको से कुछ करेक्टली मैच कराइबो एटा मैच कर रही तुमको इजिली हे परिबो इजीली हे परिबो. टिके ध्यान से करिवो नले भूल भाल हे जिवो. ହେଇଯିବ. एते इजी क्वेश्चन थिला कोन मैच करिवो. दैट मींस ये होचो क्रॉस हेइजबो एटा क्रॉस हेइजबो तो बून होची माइग्रेटरी स्पीसीज पे वियना होचो ओजोन पे समस्त जानचो बाकी दीटा करेक्ट अछि. चलो 27 एटा ए डी फी किछि हबनी. ए इज द करेक्ट आंसर. 26 रो ए के बी देलानी डी देलानी काई कि एमते क्वेश्चन आसुची काई कि आसुई. 27 26 डी कहीं की हबो. ए बी सी 2 सी 2 सी तनो ना 2 सी तनो भूल बल कहीं आसुची ना 27 को आसो भूल भाल काई दउछ. 27 which of the following pollutants are covered under काली हमें स्नैक काली एटा मु पढैथिली काली डिस्कस करिथिली एटा काली डिस्कस हेइथिला लास्ट क्लास रे नैक अंडर रे. काली डिस्कस करथिली एटा मु कहिथिली भी को गैसेस बिल्कुल भी भूल करिवनी. D is correct answer. Yes. Rasmi, Shubhakant, Linku, Lucky, Shikha, Lopamudra, Sukhoi, Sujata, Sunita, Rasmi, Lilima, everybody is come. Mahakod, Thabira. 26 that's A correct. 28 and 29 back to back questions. The Rio Plus 20 Summit 2012 is officially known as what? $28.
28. The last two question is left. Again I repeat, PDF कोटी पाइबो StudyIQ platform रे पाइबो. Otherwise you can also OS Mentor Telegram channel जोटा मोर पर्सनल सेठी पाइजो OS Mentor. So Telegram जीवो OS Mentor सर्च करिवो पाइजो तुम. Yes, answer would be what? UN Summit and the Sustainable Development. ताले मैं आपको कौन कहबा कोन यूएन समिट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा था ना 28 तो ना भूल कहते मु अच्छा अच्छा नहीं नहीं ठीक अच्छे. UN Conference on Sustainable Development. Yes, conference, sorry. ये इज द करेक्ट आंसर. यस यस ये is the correct answer. नहीं नहीं ये is the correct answer. UN Conference on the Sustainable Development. दैट इज द करेक्ट आंसर. यस करेक्ट आंसर किए के देची शिखा देची थबीरा देची सुजाता देची प्रकाश लिकु वा लोपामुद्रा शत्रु लकी सस्मिता शुभकांत समस्त देची. बहुत बढ़िया. नहीं ए हबो ना 28 ए हबो बी नो ये हब 28. $29 and $30 last two questions. Last two. The Wildlife Crime Control Bureau WCCB in India was established. Easy question. देखो एटा इजी क्वेश्चन नहीं परियो देखो 29. 29 बी कोची तमरो शिखा कोची बी शत्रु कोची बी रश्मि एवरीबॉडी इज गोइंग फॉर बी बी बी. ये तो जाना ही पड़े वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर आसो कौन इज व्हाट कमिंग अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अंडर आसीजो. बहुत बढ़िया. द लास्ट क्वेश्चन द चिपको मूवमेंट. द लास्ट क्वेश्चन पीडीएफ कोठी पाइबो मु कहिची ओएस मेंटर वेयर टेलीग्राम चैनल जॉइन करिवो. That C is the correct answer. Community participation in conservation. Yes. तो ये 30 क्वेश्चन आज थिला. देन आमे नेक्स्ट जो आसीबा काली तमर आज हेउची कोन आमे कहबा टुडे इज योर फ्राइडे. तो आमे सैटरडे आमे साइंस टेक नहीं के आसीबा. तो काली आमे साइंस टेक नहीं के आसीबा साइंस टेक ऊपर राइट. काली आमे आनिबा कोथरे साइंस टेक ऊपर क्वेश्चन नहीं के आसीबा राइट. तो एनवायरमेंट रो आमे देखिदेले लगभग 50-60 क्वेश्चन. तापर नेक्स्ट वीक रे पुनी एनवायरमेंट रखिबी. काली रखिबा में सैटरडे रे कोन रखिबा साइंस टेक रखिबा. Thank you so much for the joining the session. But keep sharing this and join OS Mentor Telegram channel to get the PDF and the other resource as well. Thank you everyone. Good night to all. हाँ जो मानकर सिलेक्शन है नहीं once again मो तरफ रू I am very sad for that, but I can say this much that Almighty will do the justice. तमन को justice दिने दिने मिलिबो. Hard labor करो, effort करो, good direction रे. One day you will get the success in other form as well. Thank you everyone. Good night to all.